Talking about the machine, guys, it is named as the BENELLI TRK 502X. Actually, this is the off-road version, and the standard one is named only 502. Not going to much of a technical specifications. All I can say is that it is a power-packed machine with a 500cc inline twin-cylinder liquid-cooled engine, generating a power of around 47 bhp at 8,500 rpm and 46 Nm of torque at 6,000. It has got a 20 liters of massive tank, and the company claims a mileage around 30. So it has a 6-speed gearbox with a wet clutch for a smoother ride experience. Surprisingly, it has a tubeless tire, and also it has got USD forks at the front, and the rear suspension is preload and rebound adjustable. Also, it has both a digital and analog speedometer with the price of 5,50,000 ex-showroom. The power-packed BENELLI TRK 502X. This is the one meant for off-roading क्योंकि इसका spoke wheels है, alloy wheels वाला 502 है, and the tires are ये 180 है ना, 180 और सामने का 130 120. This is a 180 section tire and this is 120. Parallel twin engine, liquid cooled. Weight is on the higher side. It's like a 235 kgs dry. लेकिन रास्ते पे चलने के वक्त उतना लगता नहीं है, एंड काफ़ी भगता है यार ये गाइस. क्या स्पीड उठता है, एंड सैडलिंग पोजीशन इज़ ऑसम, सिटिंग पोजीशन इज़ मोर ऑसम, एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ दिस इज़ द विंडस्क्रीन. नो, विंडस्क्रीन की वजह से आपका गाड़ी में मतलब आपका हेलमेट एकदम वॉबल नहीं करेगा. ऑसम ऑसम जस्ट. एंड दिस इज़ द चार्जिंग पॉइंट. हियर आप USB लगा के चार्ज भी कर सकते हैं. मेंट फॉर टूरिंग गाइज. Just love this bike. All right, this beast right now. कितना बड़ा है यार ये गाड़ी. आराम से. क्या मस्त बाइक है यार. दिस वॉज द वन आई वॉज प्लानिंग फॉर, बट यार पैसा नहीं है. पैसा का बात है यार. थैंक यू सो मच.